Hi, good evening. I'm Sandeep, and you're watching Weekender at 5. In today's news headlines, Prime Minister Jacinda Ardern has announced the new mask mandate as part of government's steps in managing the Omicron spread in the community. Ardern was speaking with Director General of Health, Dr. Ashley Bloomfield, immediately after cabinet meeting today. Masks must now be worn at food and drink businesses, Prime Minister said. In practice, diners will now be asked to wear masks when getting up from a table to use the bathroom. We are also now requiring that a face covering be an actual mask, said the Prime Minister. This means that the use of t shirts pulled over up to the mouth or other haphazard measures will be discouraged. The new rules will take into effect on Thursday, February 3rd. Earlier in the day, a leading epidemiologist has said isolation requirements should be relaxed when Omicron is surging in New Zealand. Professor Michael Baker said at the moment we are still treating Omicron like the Delta variant, still contact tracing every case and trying to stamp out transmission to slow down the virus. That's the right thing to do now, Baker said. But later on, when Omicron is everywhere, it's quite reasonable. In fact, it's the right thing to do is to relax the isolation requirement. Right now, the isolation requirement for anybody affected by COVID-19 virus is 14 days, and anybody considered close contact or living in household has to self-isolate for 10 days, which is after the 14 days has passed. In today's interview section, we will be discussing with one of a key member of community from hospitality sector to understand how the new mask rules imposed by the government is going to affect their business and how they will be enforcing it on the ground. So we have got Mr. Amar, who is manager of Lealport Suites, one of the famous shops in Botany, and also manager of other group of hospitality services. So welcome to our digital show, Amar. How are you today? I'm good, Sandeep ji. Thank you so much for getting me here. राइट सो अमर जी, आपने सुना होगा आज की हेडलाइंस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो नया मास्क मैंडेट है, और इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें कि मतलब आपको ग्राउंड में क्या दिक्कतें आ सकती हैं या आपने एंटिसिपेट किया है या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर देखिए, जब as soon as आपकी रेड लाइट ट्रैफिक न्यूज़ केम इनटू पिक्चर ना, तभी से ही सिचुएशन वाज पैनिकिंग, we saw that all of a sudden there was a rate that customers सारे वापस जाना शुरू हो गए थे, from the restaurants. And जो अब ये न्यू अपडेट आई है, इससे आई थिंक डेफिनेटली इट विल इफेक्ट अस अ लॉट. आप खुद ही सोचिए, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, एज सुन एज यू फिनिश, हमारा कोई भी स्टाफ आपको आके बोले, जस्ट प्लीज़ वेयर योर मास्क. अगर आपने टॉयलेट जाना है, प्लीज़ वेयर योर मास्क. एक वो मास्क वाली चीज़ से, एक साइकी से आई थिंक बंदा किस फॉर्म में ले अपने ऊपर, वी कांट से. सो आई थिंक डेफिनेटली इससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होएगा. और कीपिंग इन माइंड जो अभी रिसेंट लॉकडाउन्स लगे हैं और जो अभी ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, उससे अभी डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हुए हैं सर. बिल्कुल नहीं, आपने बहुत सही बोला. जो कि कंसर्न है, जो कि हमें बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अलग अलग मोमेंट पे शेयर किया है. एंड इट इज अपीयरिंग एज इफ गवर्नमेंट्स most of the micromanaging is being restricted to our hospitality sector only. बहुत सारे लोग हमें ऐसा बोल रहे हैं. I don't know if that's your view as well, that there are other essential services like supermarkets where probably nobody is asking for the mask mandate and imposing it very strictly, but this is happening in the hospitality sector. So is this your view, a view shared in your group of businesses as well? So definitely, I would agree with you on this statement. Even our industry colleague, they pretty much have the same statement to undertake. कि भाई, if you go into supermarkets, just rather than आपकी ट्रॉली वाइप हो जाएगी, आपको मास्क मिल जाएगा, उसके अलावा वैक्सीन पास का कुछ देयर इज़ नो सिस्टम इन प्लेस. कीपिंग इन माइंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर आप आते ही, ईच एंड एवरी स्टाफ दे चेक वैक्सीन पासेस जो भी कंज्यूमर्स आ रहे हैं,
कई ऐसा होता है कि कई रिपीटिव कंज्यूमर्स होते हैं, उनको बहुत इट फील्स कि अभी तो मैं आया था, आप दोबारा चेक कर रहे हो मेरा वैक्सीन पास, अभी तो मैंने आपको दिखाया था। सो कई बार हमें ऐसी चीज़ें फेस करने को भी मिलती हैं। डेफिनेटली आप ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं बिजनेसेस पे। No, yes, right. You're एंड quite right. कीपिंग इन सॉरी सर, No, no, go ahead. What do you say? हाँ, कीपिंग इन माइंड सर, वो सुपरमार्केट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए, कि नहीं नहीं बिल्कुल, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा कंटेक्स्ट, जस्ट एडिंग ए कंटेक्स्ट दैट वी डू अंडरस्टैंड, एवरीवन अंडरस्टैंड दैट सुपरमार्केट्स दे आर एसेंशियल सर्विसेज यस एंड सर, government cannot deny entry to anyone who is choosing not to vaccinate. Everyone understands that, we also completely understand that, but the thing is, in this program right now we are trying to bring and express the pain that is experienced probably by only one sector, that is hospitality sector, which is I think bearing the weight of government's response to covid management. Because lockdown जब था तब भी सबसे पहले यही रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बंद होते हैं। बिल्कुल सर, और अभी हम जैसे ही रेड लाइट में आए, तो रेड लाइट में कल से हम आए हैं, उसके बाद बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है डे टू डे लाइफ में। सबसे ज्यादा जो है, इनफैक्ट मेनी एक्सपर्ट्स दे हैव कम आउट एंड ओपनली दे हैव सेड statesman that has gone against the hospitality sector and the restaurants. In fact, Hospitality New Zealand CEO has tried to push back, saying that most of the restaurants, they are working in close cooperation and collaboration with Ministry of Health and following all guidelines to ensure that they offer all safety to their guests and patrons, isn't it? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ईच एंड जैसे जो भी न्यू अनाउंसमेंट्स होती हैं, सबसे पहले व्हाट आवर स्टाफ डज इट कि सबसे पहले तो सारी अपडेट्स प्रिंट आउट होती हैं, एवरीथिंग गोज ऑन टू द पोस्टर्स, कहीं पे कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, कीपिंग इन माइंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव कंसर्न जो भी चल रहा है, इट्स कोविड-19। सारी जगह पोस्टर्स इन प्लेस हैं हमारे, कोविड एनजेड पास वेरीफाइड एप्लीकेशन सबने लगाई हुई है अपने फोन्स में, एवरीवन चेक्स इट्स अ बिग टास्क। और प्लस कीपिंग इन माइंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के ऊपर अगर हम ये सारी चीज़ें चेक्स रखते हैं, तो एक ये हमारा आई वुड से एक स्टाफ का वर्कलोड और इंक्रीज होता है, यू आर गेटिंग ऑन टॉप वन मोर पर्सन। ठीक है, आपको बिल्कुल, उसकी वेजेस भी निकाल रही हैं, हॉस्पिटैलिटी ऑलरेडी सेक्टर इतना लो चल रहा है, श्योर तो श्योर, एंड दैट इज व्हेन इज एक्स्ट्रा वर्क, इज मोर ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। और एक्स्ट्रा मेरा वर्क है। व्यू पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा सर इससे, कि कीपिंग इन माइंड ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स के अंदर आना और जाना, रादर देन अगर हम थोड़ा सा अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा फोकस करती है ज़्यादा, सो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। एंड आई थिंक मैंने पीछे एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें आई थिंक इट सेट कि roughly around 20,000 nurses are required in NZ की to fulfill all the hospitality needs. Definitely. Well, definitely. That's a very big issue, Amar. I do understand. Thanks for bringing up that issue. 20,000 nurses. I may or may not agree with that numbers, but recently some nurse associations, they have said that we are at least short by 100 ICU beds. Like if we are going into Omicron बिल्कुल tsunami, सर, as people they are saying. So when they are talking about one bed, they said, look, bed is not just not an infrastructure. It comes complete only when we can bring in nurses. And those nurses association, they have openly said that probably immigration setting could have done a major thing over here. And that is another area where government has copped a lot of criticism, because government has actually kind of stopped whole immigration. No skilled workers they are coming, and your sector, that is hospitality sector, is anyway facing a huge shortage of skilled workforce. उस पे आपने जैसा बताया कि imposing this vaccine pass and checking and mask, उसमें आपको एक एडिशनल वर्कफोर्स निकालना पड़ रहा है, गिवन डेफिनेटली डेफिनेटली सर, आप किसी से जाके पूछिए, सेम सबके पास यही नंबर्स होंगे। जी जी, नहीं नहीं, I completely agree and understand. And coming back to our main topic of the day, imposing the mask mandate on the ground and how convenient it is. One of another hospitalitarian who I was speaking to me on the phone, and he wanted to express his comments anonymously. He didn't want to come on screen, but he raised a very ओके, valid point. He said, and I want to check with you, Amar, if you agree with that or not. वो उनका कहना ये है कि आज की डेट में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक एक कस्टमर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और जब हमारे डोर से मान लीजिए 10 कस्टमर भी अगर आते हैं दिन भर में, तो वी ट्राई टू एंश्योर टू लुक आफ्टर देम एंड एड्रेस ऑल ऑफ 100% फ्रॉम, या
address all of their concern. हम उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाते हैं, दूर बिठाते हैं, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये बड़ा वैल्यूएबल कस्टमर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इतना माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है कि हम उन्हें जाके बोलें कि मास्क पहनो आप या नहीं पहनो आप। It is quite understood at this stage that yes, it is about safety and everyone सर will आई be थिंक doing. कस्टमर भी वेल मैच्योर इनफ है टू कि मास्क उनको पहनने हैं अभी किस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है। बट टॉकिंग अबाउट कि मुश्किल से कस्टमर आ रहा है आपकी दुकान में, राइट? जी, दे आर जस्ट कमिंग इन टू हैव गुड फन, टू हैव गुड फूड, एंड फिनिश करते ही उसे कि मास्क लगाना है, गोइंग इन टू टॉयलेट यूज मास्क लगाना है। इट्स प्रीटी अंडरस्टूड कि सर उनके लिए भी थोड़ा अनोइंग है। right, right. But anyways, just to add on that, what Prime Minister has said that this is broad guidelines and these are not rules. Well, करेक्ट सर। that's the best part. That's the best part. So guidelines, people. What she said was that people they are looking for broad guidelines, not exactly rules. So probably what she meant was that yes, she is leaving. Government will be leaving it at the discretion of every business owner, every hospitality sector, to implement in a way that doesn't destroy or damages the experiences of customer, and doesn't disturb your customer base as well. You don't lose any business. So probably that's what government meant. So before I let you go, Amar, any one final message that would you like to speak on behalf of group of hospitalities that you represent? सर देखिए, सीम्स लाइक इट्स लिटिल बिट ऑफ टू मच, ठीक है, कि हम इतने स्ट्रगल से अभी निकल रहे हैं। इट्स अ डिफिकल्ट फेस फॉर एवरीवन। अभी हम सिर्फ उठते ही हैं, देन देयर इज अनदर लाइट सिस्टम कमिंग इन, एंड एक कस्टमर को ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, अच्छा रेड लाइट आ गया, पहले तो जाके देखते हैं अपडेट्स हैं कि भाई मैं जा सकता हूं, कहीं नहीं जा सकता, क्या चीज़ें हैं। तो एक अपने आप के अंदर ही वो सर एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, लाइट सिस्टम्स हैं, इनको फॉलो करना है, क्या करना है। सो आई वुड से आई थिंक इट्स अ लिटिल टू मच, बट कीपिंग इन माइंड कि गवर्नमेंट इनको किस तरीके से आगे और स्ट्रेटेजाइज करती हैं, अगेन आई वुड से गोइंग ऑन टू हेल्थ केयर साइड पे, देन आई थिंक दैट वुड बी अ गुड सोल्यूशन टू कि जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस थोड़े अपस्केल हो सकते हैं, दे Right. कुड बी ऑन बैक ऑन ट्रैक अगर ट्रैफिक Sure. लाइट सिस्टम से हम बाहर आते हैं। सो इट शुड बी Sure. ओके। Sure. Thank you very much, Amar. I really appreciate your comments and your time थैंक यू as well. संदीप जी। Thank you. थैंक यू सर। So that was Amar from Layalpur Suite, sharing his experiences after today's announcement, where government has announced about mask mandates. So that was the first of the announcement. Probably we would be looking forward to some more announcement coming in near future as we move into next stages. So this is Sandeep along with Indian Weekender production team at Weekender at 5. Thank you.